Good morning, students. Uh, Today we will continue with the basics of Python. In last lecture, we discussed about token, and I have already discussed tokens are in token we include keywords, then identifiers, then we include constants, or you can say these are literals. और लिटरल्स में वी हैव डिस्कस कि लिटरल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो इसमें हमने किया डिस्कस था नंबर वन स्ट्रिंग लिटरल, नंबर टू numeric literal, and in numeric literals we have discussed there are three different type of numeric literals. These are binary, then octal, then hexadecimal, and last one is decimal. So these are different type of literals, numeric literals, and remember one thing, in this we use decimal number system. It means when I say my marks is 85, 85 is a decimal number. If I say my house number is 5, it means 5 is a decimal number. In decimal number we have a total 0 to 9, total 10 digits are there, and that's why it is called deci. Deci means 10. But the other number system, these are binary, octal, and hexadecimal. These are used by computer system. For example, in the case of binary, we have only two numbers, 0 and 1. In the case of octal number, we have a number from 0 to 7. In hexadecimal number system, we have 16 digits. 16 digits from 0 to 9, then A to F. Okay. And in the case of octal number, we have only 8 numbers, 8 digits. Here in the case of binary, we have 2 digits. Now, these three number systems are used by computer system. Data saved in computer hard disk is in the binary format. जब भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, that is in the case of binary case. Now hexadecimal, I am giving one example of hexadecimal where hexadecimal is used. Look at here. I am opening Photoshop. Look at here. In the color system, look at here. I have selected this blue color. Look at here. Its color code is in hexadecimal number 3D78FO. ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है. इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स R रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 2 डिजिट G और लास्ट 2 डिजिट B रिप्रेजेंट कर रहा है. लुक एट हियर. नंबर सिस्टम इज ये. इसमें जो आपके पास 3 and B है, this is your R. We know that in color, in light there are 3 colors, R, और जो 7 and 8, these are G, and last 2 digits are B. और इसमें ये जो नंबर है, ये नंबर 0 से लेके कितने हो सकते हैं, 0 to F.
So that's why this is hexadecimal number system. आप यहाँ पे देखोगे different colors होंगे, उसके number भी different होंगे. Look at here, this color code is different. I select red, different red color, code is different. So it increase the quantity of RGB, और जैसे जैसे quantity increase हो आपके पास कलर का कलर डिफरेंट हो जाता है. So this is in hexadecimal number system. Himanshu, is it clear? Himanshu? Okay. Yes, sir. And the same way, hexadecimal number system is octal number is also used in computer system in different softwares. Now, problem is, if you go through the curriculum of computer science, even in lower classes and also in upper classes, आपको क्या दिया होता है, कोई डेसिमल नंबर दिया होता है, तो आपको कहते हैं इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू बाइनरी. ठीक है, सो नंबर इज 25, ये डेसिमल है, तो आपको कहेंगे कि इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा. In your syllabus there is a number system chapter. This is chapter number this is chapter number 2. That is a theory chapter, so we will discuss later on. But in Python we can convert, we can give the numbers value in decimal, and we can convert it into different octal number, binary number, and hexadecimal number system. Look at here. I have one number, x is equal to 25, 15, 25, okay? So if I display x, by default, it display 25. Suppose I want to convert this number into binary. What I will do, look at here. BIN X. So look at here. Binary code of 25. Here OB stand for binary. यहाँ इसके आगे जो 0B लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बाइनरी में है. ठीक है, सपोज मैंने एक नंबर दिया x इज इक्वल टू 0b. 0b स्टैंड फॉर बाइनरी. आई गिव 11000 ये बाइनरी नंबर है. जब मैं x को डिस्प्ले करूंगा, ये क्या डिस्प्ले करेगा, 25. इसका मतलब ये हुआ x जो 25 इज ए बाइनरी नंबर, और इसका क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या है, दैट इज 11001. और अगर आपने किसी वेरिएबल को बाइनरी वैल्यू देनी है, बाय डिफॉल्ट हमेशा डेसिमल होती है, तो उसके आगे, उस नंबर के आगे आपको लगाना पड़ेगा 0b. 0b स्टैंड फॉर बाइनरी नंबर. इज इट क्लियर? हर्षिका, इज इट क्लियर? Yes, sir. Garav, it's clear? Yes, sir. Okay, now tell me, Deepak, unmute yourself. Yes, sir. मैंने एक वेरिएबल y दिया. Here I declare one variable y. Zero x 0b 567. So there is error. Why error? Deepak. Deepak, my question is clear? Yes, Gaurav. सर एरर इसलिए आया क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज डिस्प्लेस इन जीरोस एंड वंस ओनली. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट Gaurav. तो उसमें 5 6 7 होता ही नहीं है. वेरी गुड बेटा. इफ आई एम गिविंग वैल्यू 0b
10101. Look at here. It is a septet, and its corresponding decimal value is, look at here, value of decimal, wait 1 minute. Decimal value is, look at here, 21. इसका मतलब जो 21 आप कहते हो आपके पास 21 है, वो जब आप कंप्यूटर में सेव होते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? 10101. Is it clear? Okay. Now, next number system is octa number. Excuse me, sir. Yes, बच्चे. सर Yes, मेरे को Himanshu. एरर क्यों बता रहे हैं कि y not undefined है? बेटा देखो बाइनरी में there are only 2 digits, 0 and 1. Himanshu. Yes, sir. So we are giving here 5, 6, 7. These are invalid. Yes, sir. Okay, that's why error is here. Now next is, if I want to give one number, I want to convert, suppose 25 है मेरे पास, ठीक है? If I want to convert x is 25, I want to convert this number into octa number. What I will do? Oct. Here I can give any value 25. Directly I can give 25. Look at here. Its octa number is 0O. 0 means octa number. 31 is a number. तो 31 इसका octa number है. So look at here. मैंने एक वेरिएबल को y को दे दिया 0O. 0 means मैं कौन सा नंबर दे रहा हूँ? octa नंबर. मैंने नंबर दे दिया 31. तो जब मैं y को डिस्प्ले करूंगा तो वो क्या डिस्प्ले होगा? 25. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे सपोज y को वैल्यू देता हूं 0O 89. Now who will tell why error is here? Yes, hurry up. Octa number. Quickly give the answer. I give 0O. 0 means octa. Yes, Kinjal. Yes. So because it can take only the numbers from 0 to 7. Very good, beta. And Very, here, and, yes, सर good. उसके and octa में here it 9 is है ही 8 नहीं. and 9. हाँ, 9, 8 और 9 तो होता ही नहीं उसमें. Very good, beta. Very good. In the same way, if I want to give the number in hexadecimal, suppose x is 25. इसका hexadecimal number क्या होगा? तो hex 25. तो ये hexadecimal में कन्वर्ट कर देगा. hexadecimal number कौन सा है? 19. 0x means hexadecimal. So suppose I want to give a number x is equal to 0x19. तो जब मैं x को डिस्प्ले करके देखूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 25. But students, is it clear? Students, is it clear? Okay. Now in short, what I'm saying, ये आपकी बुक में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, but I discussed this in detail. So in short, we can say कि अगर आपने, if we give value, it is always in decimal. But if we want to give value in a binary number, what you will have to use 0B. This stand binary number. After that you can give the value. और अगर आपने किसी बाइनरी नंबर को किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यू विल सिंपल BIN 25. तो ये इसका बाइनरी नंबर दिखा देगा. और अगर इफ यू वांट टू गिव द नंबर इन octal, what you will do? 0, then O, then any number. And if we want to convert any decimal number into octa number, oct. And if I want to give any number in hexadecimal, if I want to convert any decimal into
hexadecimal DBA से. So these will not be in so much detail in the paper, but for your practical knowledge, these are important. Yes. Harshita, is it clear? Harshita. सर एक बार कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी करके दिखा दो. Conversion of a decimal to binary. कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. ये सिंपल, आपने BIN नंबर लिख दो. ओके. ठीक है. अगर आपने Thank you. हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, hexa. If you want to convert into octal number, then octal. थैंक यू. Welcome it. Now next is there is a one special literal that is called none. Suppose x is equal to n capital none. None means no value. So if I display x, it will display nothing. None is a special literal. तो हमने डिस्कस किया था, there are different type of literals, numeric literals, string literals, special literal. None is a special literal. None means no value. And next is your string, your literal collection. तो literal collection अभी आपको समझ नहीं लगेगा, later on we will discuss. So there are different type of literals. तो पेपर में क्या आ सकता है? Write down different type of literals. You will write string literal, numeric literals, then Boolean literals, then special literals, then literal collections, and collections we will discuss later on. So these are literals. Boolean literals. Suppose मैंने x की वैल्यू ले ली true, t capital है. So look at here. In the same way, I can y is equal to false, f capital. So these are Boolean values, Boolean literals, true and false. Harshika, is it clear? Yes, sir. Okay, students, next is if I want to give comment in Python. So what is the meaning of comment? Comment is a information for developer. This is not for final user. ये user के information नहीं होती. Suppose मैंने एक program बनाया. Look at here. New file. Suppose I want to display a comment. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे hash program to add two numbers. I declare x, I declare y. Then I print x plus y. So when I run the program, look at here, 30 is on the screen. Here the first command, here I use hash. This command will not be implemented. तो ये comment है, comment implement नहीं होगा. तो it means this is only for developer. Program को आप जब चलाओगे तो comment कभी display नहीं होते, comment हमेशा coding में display होते हैं. तो comments are for developer regarding the things. तो ये developer के लिए जो प्रोग्राम बना रहा है उसको नॉलेज के लिए, उसकी नॉलेज के लिए. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ले लिया x, एक वेरिएबल ले लिया e,
एक वेरिएबल ले लिया m, then I take another variable c. Suppose these are the marks in different subjects. तो मैं इसके आगे कमेंट लिख सकता हूं. Look at here, hash English marks, hash means single line comment. Hash is single line. एक लाइन में अगर कमेंट करना है तो you will have to use hash. Look at here, mass marks. So this is for developer. हमने वेरिएबल लिया emc और we are defining कि इनका मीनिंग क्या है. So look at here, total marks 230. So this is called command, non executable command. अगर मैं print के आगे hash लगा दूं, I run the program, so there is no any output. Who will tell why output is not here? Hurry up, beta. Students, raise your hands. Why output is not in the screen? Yes, Harshika. सर क्योंकि हमने प्रिंट हाइफन की वैल्यू हमने बताया नहीं वहां में हाइफन की क्या मीनिंग है इसमें प्रिंट का. Wait, Himanshu. Yes, Harshika. सर क्योंकि हमने प्रिंट के आगे हैश लगा दिया है जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं कर रहा. Yes, very good, very good. Now it is not a executable command. ये कमेंट बन गया. Yes, Himanshu. सर मैंने भी यही कहना था कि वहाँ हमने हैशटैग लगा दिया हमने इसलिए नहीं लगेगा. Yes, very good. Now, next is comment may be of multiple line. तो ये multiple line भी comment हो सकती है. Suppose look at here. मैंने यहाँ पे enter press कर दिया, फिर उसके बाद enter press कर दिया. मेरे multiple line है. I execute the program. There is error because this is single line command. One way is I will have to use hash before every line. Second way is in place of using this, I can use multi-line command by using 3 times single quotes or double quotes, and at the end 3 times single quotes or double quotes. This is called multi-line command. Gaurav, is it clear multi-line command? Yes, sir. To note down, commands are non-executable commands. These are only for developers, and there are 2 types of commands. Single line command is with the help of hash, and multi-line commands with the help of 3 times single quotes, and at the end 3 times single quotes. So this is multi-line command. Okay, students, any doubt in this topic? Kunal? Sanya? Navya? Mansi? No sir. Okay, beta. Now we are going to next topic. नो सर. Okay, beta. Next topic. हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफायर्स.
तो हमने आइडेंटिफायर में दिया था कि these are user defined names. User defined names. For example, you give a is equal to 90, y is equal to 80. Here a and y, these are identifier user defined names. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि in identifiers there are some naming rules. It can't be start with a number, it can be start with underscore, it can be start with the alphabets. We can't use special characters, we can't give space. Now remember one thing, identifier names may be of functions, जो भी हमने नहीं किया, later on we will discuss. It may be name of a class, maybe name of any other type, maybe name of variables. तो ये जो identifiers name होते हैं वो functions के name हो सकते हैं, class के name हो सकते हैं, variables के name हो सकते हैं, even libraries के name हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हमने जो सबसे पहला डिस्कस करेंगे variables. In this program, here E, M, C, these are identifiers, but more specific, these are called variables. These are variables. Now, what is variables? In any Python program or program of any programming language, variables are used to store the data. But remember one thing, it will store the data till you are working. Suppose it means if after closing the program and later on if we want to retrieve the data, it is not possible. Variable का data short period के लिए memory में रहता है. Suppose मैंने program बनाया, program execute किया, program बंद कर दिया और program को बंद करने के बाद if I want to fetch the data, it is not possible. So variable contain data for the normal working of your program. Normal program को working में जो भी data को हम handle करते हैं वो variables की help से करते हैं. So there is two things. So look at here, variables. These are used to store data for short period. Short period means, it means program is running. After program, if we want to fetch the same data, is not possible. Suppose मैंने एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, suppose मैंने ये यहाँ पे x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी false. अगर मैं इस Python, if I close the Python, later on I will display value of y, it will not display. Look at here. I open the Python again. I display y, it will not display the data. Now, variables always saved in another way is, another definition of variables. These variable is the rename of memory where data is saved. Data is stored or saved. Now, according to this, जो हमारे पास कंप्यूटर में रैम होती है, रैम डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होती है. रैम के डिफरेंट सेल्स होते हैं. Look at here. Data is saved in RAM, and RAM having a different cells. For example, every cell has a unique address. जैसे आपके पास Excel है,
एक्सेल में सेल्स होते हैं तो हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है. इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर these addresses. तो हम क्या करते हैं, we rename these addresses according to our requirement. तो हम क्या करते हैं, इन एड्रेसेस को रीनेम कर देते हैं. ठीक है, सपोज मैंने आपको सेव किया x इज इक्वल टू 10. इसका मतलब ये हुआ मैंने एक रैम में एक सेल का नेम दे दिया x और उसमें सेव कर दिया 10. Is it clear? Now x has two values. One value is called, look at here, I declare here, suppose x is equal to 10. It has two values. One called, look at here, here is L value. Another value is called R value. R value means real value और right hand side value. L value means location value. तो इसमें R value 10 है, हमने X को 10 दिया. अब L value क्या है, इसकी लोकेशन. जिस भी मेमोरी में को हमने X का नेम दिया है उसकी रियल में एड्रेस क्या है, कहां पे X की वैल्यू सेव हुई है. Look at here. If I say IDX, look at here, RAM का एड्रेस जहां पे X सेव हुआ है उस मेमोरी का एड्रेस. So here this is your L value, location value. और अगर मैं X को डिस्प्ले करता हूं, this is R value. So there are two type of values. right hand side, देखो right hand side में 10 है, तो right hand R value means right hand side. और हमारे पास L क्या है, इसकी लोकेशन वैल्यू. तो there are two values here. Look at here. Here R value is 10, but your L value is this one. ठीक है, इसका मतलब इस वैल्यू को हमने नेम दे दिया X. Otherwise it is very difficult to remember this. It is very difficult. Suppose मैंने एक और वेरिएबल ले लिया Y. I take another variable Y is equal to 30. I display ID Y. It will display memory address that will be different from X. वो X से different होगा. ये कंप्यूटर देखेगा कि आपको कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है. This is the working of your operating system, which it will give you the free cell. ये हमेशा आपको फ्री सेल देगा. Concept is clear? Kinjal, Kunal, Yes, sir. concept clear है बेटा? Yes, sir. So in short, we can say variable having two values, L value and R value. R value means right hand side value, that is a value given to the variable. और X value इसका memory address है. और किसी भी memory address को अगर हमने check करना है, I will have to use ID function. Look at here. So now time is over. I am closing the meeting. Take care. Bye, beta.